Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. In this video, I'm going to talk about one of the most important aspect of CET exam. Now, it's been my observation that every year बच्चा लोग बहुत पढ़ाई करता है, right? They do all the mocks, all the coaching, everything they do. But एक चीज होती है जो हमें समझ में आनी चाहिए by now is that किसी भी एग्जाम के दो पार्ट्स होते हैं. Every exam will have two segments to be very honest. One is the preparation level. आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आपने क्या क्या प्रिपरेशन में किया. एंड द अदर थिंग इज द डे डे प्रिपरेशन. अगर आपने मेरे कैट के स्नैप के अगर एग्जाम्स की अगर आपने वीडियो देखे होंगे, आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस ओपिनियन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट टू स्ट्रेटजी. वन इज योर प्रेप स्ट्रेटजी, द अदर इज योर डे डे स्ट्रेटजी. एनी वन ऑफ द स्ट्रेटजी इफ इट्स नॉट इन सिंक देन देयर इज अ प्रॉब्लम. फिर आपका एग्जाम गड़बड़ा सकता है. नाउ प्रिपरेशन होती है CET की, like you do everything that needs to be done for CET, but there is one factor जो पूरी CET खराब कर देता है. And most of the students, it is not only for JBIMS, even if you talk about somebody who wants to get into Dalmia, ये point उसके लिए भी उतना ही important है जितना JBIMS के बच्चे के लिए important होगा. And that one point nobody talks about. Even if you look at all the coaching classes who are training typically for CET, are not taking into consideration these kind of factors. और ये बहुत important है. And the factor is called as surprising factor. If you check the portfolio of management entrance exam right from CAT till CET is the most surprising exam I would say, and you will definitely agree with me on this. Check the track record of CET. 2019 surprises था, 2018, 2017, 16, 15, 14, 12, 11. From last 8 years it has always been surprising. हर साल कोई ना कोई surprise आ ही जाता है. Now let me tell you the weightage of the surprise. Every year, out of 200 questions, you will bare minimum see 55 to 60 questions having surprises in it. And that's a big number. That's like what? 30% of the exam. Getting my point? So, surprises are very, very important. And this is what happens. Like 2019, अगर आपने दिया होगा 2019 का CET, you can kind of get into the flashback. या फिर अगर आपने CAT लिखा होगा, you can understand. CAT का सबसे बड़ा surprise क्या था इस साल का? Verbal. राइट. CET 2019 का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? डेटा इंटरप्रिटेशन एंड योर पजल्स. सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली प्रिपरेशन तो पूरी चलती है, पूरी साल भर प्रिपरेशन चलती है. डे डे पे क्या होता है? फॉर द फैक्ट वी सी दैट सरप्राइज ऑन द डेस्कटॉप, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी गेट्स फेल्ड. नाउ दैट्स द मेजर प्रॉब्लम. नाउ इफ यू आर समबडी हु इज रियली एमिंग एट जमनालाल बजाज, यू कैन नॉट अफोर्ड टू एक्चुअली मिस ऑन एनी ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज द मोमेंट यू सी द सरप्राइज then there is a problem. क्या पेपर ऐसे कैसे आएगा? कैट में वही हुआ था, लास्ट ईयर CET में भी वही हुआ था. 48 questions were based on puzzle and students went bizarre कि यार ये हो क्या रहा है, ना questions बन रहे ना कुछ समझ रहा है. It's so time consuming and you have only 2.5 hours to actually crack the paper. So surprise is, even if you are very well prepared, even if you are scoring 170, 160 in all the mocks in CET, the moment you are not able to tackle those surprises, sir problem होगा, आपका score उल्टा पुल्टा हो जाएगा. And that's the reason it's very important that you need to inculcate those surprises while you prepare for your CET. So, I spoke to students, who did not get into JP this year or who got into seat number KSO में. They said that वो surprises जो था, जो आया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, पूरा मोरल डाउन हो गया, स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, and we couldn't understand what needs to be done on the day. So, the fun day here is that what I do basically, or what I'm going to do is basically, how about trying to understand the possibility of surprises that can be there on the day and start working on it right from now. For CET, you cannot start working on surprises from the month of February because that's going to be too late. So this is the right time for you to kind of take care of those surprises, understand कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. 2011 से पूरा का पूरा ट्रेंड चलते आ रहा है. None of the coaching institute is talking about it. None of the coaching institute is actually preparing students on this front. I'll give a quick example. सरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? सरप्राइजेस का सबसे बड़ा मतलब होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी का इंक्रीमेंट होना. Absolutely. So your level of difficulty goes on a very high level and you couldn't digest कि ये question भी आ सकता है, right? That's where we have challenger level in C2C mentors, which helps you to kind of tackle those surprises. Now, the point here is that if you are somebody who is just beginning with CET का preparation, भाई अभी से चालू करना है CET का preparation. अभी कैट हो गया, स्नैप हो गया, वेकेशन भी हो गया, आई थिंक अभी मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. आप इस टाइप के स्टूडेंट हो या फिर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, इवन फॉर यू
इट इज इंपॉर्टेंट कि आप व्हाइल यू प्रिपेयर नाउ सरप्राइजेस को ध्यान में रखिए, आपका प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपका पोटेंशियल है दालमिया तक जाने का, या फिर अगर आपका पोटेंशियल है केजे सोमा तक जाने का, बिकॉज ऑफ दिस सरप्राइजेस विच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और विच वी आर नॉट एबल टू फोरसी, या फिर इसकी प्रिपरेशन हम करते ही नहीं है, जो भी टिपिकल चीज है हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ये फॉर द फैक्ट हमें पता नहीं होता है, राइट, फॉर द फैक्ट हमें पता नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज दैट केजे जाने वाला बच्चा वो दालमिया में जाता है, दालमिया जाने वाला बच्चा चेतना में जाता है। सो ये सरप्राइजेस जो है दैट कैन कॉस्ट यू अ लॉट, and that is the reason you have to know what is going to be your strategy to tame all these surprises. Trust me, भले 2 चैप्टर आप कम पढ़ो चलेगा, listen to me carefully, भले 2 चैप्टर कम पढ़ो चलेगा, दो I would say whatever topics कम करो चलेगा, but ये जो फंडा होता है किसी भी competitive exam का, that how do you handle those kind of surprises and how do you tackle your entire preparation, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, even for JB, Signum, KG, whatever college you talk about. So what I'm going to do is, I have already announced my workshop is happening in Pune tomorrow, which is Sunday 29th of December. I am going to take the same workshop in Mumbai on 5th of January. Then the workshops will be in the month of January for Nagpur and Nashik also. Students have requested a lot for Nagpur and Nashik, so I am going to conducting workshop in the month of January itself. Nagpur और Nashik में ही workshop होंगे आपके. So in tomorrow's workshop in Pune, Mumbai, or whenever Nagpur or Nashik जब भी workshop होंगे, I'm actually going to tell you how do you tackle these surprises. I'm actually going to tell you ये surprises कहाँ आते हैं, कौन सी segment में आते हैं, और expected surprises CET 2020 में क्या हो सकते हैं, and that's how पूरा preparation का आपका base बना के मैं आपको दूंगा, and that's where if you're interested, you can join this workshop in Pune tomorrow. This is going to be really important because whatever you do before you prepare, before you start your preparation, you have to have your attitude, perception, and you should know your strategy for preparation. इतना कर लिया ना सर आपने, trust me, आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप 4 क्रैक करने से। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा लोग बहुत मेहनत करता है, फिर भी टॉप 4 में नहीं चले जाते, वेलिंग करते नहीं जाते हैं। वेलिंग करता कट ऑफ भी 99.20, 99.25 है, बच्चा उधर तक भी नहीं जा पाता, बिकॉज प्रिपरेशन इज नॉट द ओनली थिंग, योर प्रिपरेशन हैज टू बी बैक्ड बाय द स्ट्रेटजी एंड परसेप्शन एंड एटीट्यूड। उतना अगर कर लिया ना सर आपने, यू आर सॉर्टेड। एंड द प्रॉब्लम इज दैट अभी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो टिपिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहा, बहुत डायनामिक हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड दैट्स द रीजन टुमारोज वर्कशॉप, इफ यू आर समबडी who really want to make it to top 4 under CET, top 5, or let's say JB IMS, it's a must attend for every one of you. So the link is given in the description. Register yourself, it's a free workshop. Also I have created certain WhatsApp groups, they are preparation oriented. Serious हो, preparation करनी है, guidance चाहिए, वो WhatsApp group join करो, you are sorted. So guys, do not miss tomorrow's lecture in Pune. The address is given in the Google Doc. So kindly turn up tomorrow 10 AM in the morning. So that's it from my side guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow. Thank you.